Hello, everybody. Hello, sir. Hello. Chalo. Today's stream is very interesting stream. It is interesting for not only homeopathic student or homeopathic doctors, but those who are taking the homeopathic treatment too. Means those persons who are very enthusiast about homeopathy, or also those people who hate homeopathy. They also thought about that homeopathy is pseudoscience, homeopathy is बकवास, कुछ नहीं है homeopathy is a placebo. इन सब के लिए आज का स्ट्रीम है. So try to share it maximum, those persons you know, सबके साथ शेयर कीजिए. जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और उनको लिंक भी भेजिए जो अगर डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा मौका है कि वो अपने साथ डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप लोग तो है, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है. एवरीबॉडी हैज़ टू आस्क समथिंग अबाउट द रिसर्च एंड रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चंस. सो आज का जो स्ट्रीम है उसका जो मेन पर्पस है. एम आई ऑडिबल? आवाज येतोय माझा? इट्स ओके. So, in homeopathy, so a lot of people thought about that homeopathy is a pseudoscience, or even though it is not at all a science, होम्योपैथी इज जस्ट एन प्लासिबो इफेक्ट. ये जो हम बार बार सुनते हैं, और उसके साथ बहुत सारे कुछ अलग मीथ्स होते हैं. उसके बाद उसके रिगार्डिंग हम एक अलग स्ट्रीम लेंगे. these myths are about mostly for homeopath and also the patient also. फॉर एग्जांपल कि पेशेंट सोचते हैं कि होम्योपैथी से बहुत देर लगता है ट्रीटमेंट लेने में, रिजल्ट आने में. जो लास्ट स्ट्रीम में मैंने डिस्कस किया था अबाउट क्लिनिक सेटअप एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, as we are come under the awareness business, so we must have to show the very quick result to the patient. Unless and until you are not able to show the quick results, it is impossible to grow your practice. आपको पहले क्विक उनको रिजल्ट देना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं देंगे, द पीपल आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होम्योपैथी. बिकॉज सो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, कि जैसे the person or most of the homeopaths doing some malpractices like combinations or mother tinctures or many more things, what not they can do, I don't know. और मैं ये बोलना भी नहीं चाहता कि वो ऐसा करते हैं. So but it is very bad thing to do, because we are a genuine homeopath, so we must have to practice homeopathy correctly, scientifically. When you are doing it scientifically, then and then it will grow. Otherwise फेक चीज़ों से ये बढ़ने वाली नहीं है. जब तक आप उसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जेन्यून एस्पेक्ट्स नहीं लाएंगे, तब तक होम्योपैथी अच्छे से ग्रो नहीं होगी. ग्रो होने का छोड़ दीजिए, बट अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू योर पेशेंट्स, सच में आपका डोज देने के बाद क्या होता है. हम एनालाइज करते हैं कि एक्सपेरिमेंट एक टाइप का रिसर्च ही होता है. जो क्लिनिशियन होता है ना, वो एक टाइप का रिसर्चर होता है, but he don't have such research oriented mindset or methodologies. He don't know the what methodologies he has to apply for the research and to seek the some scientific basis for your result. ये जो काम होता है ना, रिसर्च करना, आगे का फिजिसिस्ट का होता है, सम इंजीनियर्स का होता है, आईआईटीएंस का होता है, टेक्नीशियंस का होता है, बायोलॉजिस्ट का होता है, जेनेटिस्ट का होता है. ये सब लोग जब तक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो होम्योपैथी साइंस लोगों को पता नहीं चलेगा. लेकिन हाँ, यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथी में कोई रिसर्च नहीं होता है. कुछ हर 2-4 महीने के बाद सोशल मीडिया पे मैं कुछ पोस्ट देखता हूँ, और खासकर ऐसे पोस्ट को मैं
जवाब भी देता हूँ, उनको आंसर भी देता हूँ कि होम्योपैथी में रिसर्च चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्यों चल रहे, तो क्या चल रहे हैं। और रिसेंटली ऐसा पोस्ट देखा था, मैंने उसको आंसर भी किया था। और उसी की वजह से मुझे ये माइंड में आया कि चलो वी कैन डू अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, कि होम्योपैथी में सच में रिसर्च रिसर्च होता भी है या नहीं, या सब ये कुछ नौटंकी चल रही है। क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि व्हेन वी आर डूइंग इन आवर पीजीज और आल्सो इन यूजीज, सो दैट स्टीरियोटाइप रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। जैसे आप एक कोई टॉपिक लेते हो, वही आपके क्लिनिकल केसेस होते हैं, वो एक्चुअली रिसर्च नहीं होता है, वो एक जस्ट आपका एक एनालिटिकल स्टडी होता है, एकेडमिकल स्टडी होता है। उससे आपको लगता है कि हाँ रिसर्च ऐसा ही होता है। लेकिन रिसर्च होम्योपैथी में होता है या नहीं, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल रिसर्च क्या होना चाहिए होम्योपैथी में, और किस टाइप का रिसर्च की ज़रूरत है, वो हमें पहले समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली होम्योपैथी में क्या रिसर्च होना चाहिए। मैं पहले ब्रीफ करता हूँ, फिर आप आपका एक एक क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअल रिसर्च क्या होना चाहिए होम्योपैथी में, कोई बोल सकता है क्या रिसर्च की नीड है? आत्ता होमिओपॅथीमध्ये कुठले टाईपचे रिसर्च नेसेसरी आहेत? कुठला रिसर्च, विच टाइप ऑफ रिसर्च डू वी नीड टू प्रमोट होम्योपैथी? बोलिए, कौन सा रिसर्च होना चाहिए होम्योपैथी में, किस टाइप का रिसर्च होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? खामोशी मत फैलाओ, कुछ तो बोलिए। इतना सन्नाटा क्यों है? फिर मुझे आपके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। क्विक क्विक क्विक। मेडिसिन कसं काम करतं? हाँ देन। लक्ष्मी, यू आर नॉट ऑडिबल, अनम्यूट युअर सेल्फ। हम्म। येतोय सर आवाज? हाँ, यस यस। सर, अर्ली स्टेज डायबिटीज, थायरॉइड अशा डिसीजवर अजून स्टडी होमिओपॅथीमध्ये. ओके, आणखी एनीबडी आव? सगळे सांगा पट पट पट, म्हणजे काय रिसर्च अपेक्षित आहे, काय तुम्ही प्रॅक्टिशनर आहात ना? व्हॉट डू यू आर फेसिंग द प्रॉब्लेम इन युअर क्लिनिक्स, तुमच्या क्लिनिकमध्ये, किंवा तुम्ही जिथं पीजी करताय, देन यू आर इन द युअर क्लिनिक्स, व्हॉट टाइप ऑफ रिसर्च डू वी नीड इन होमिओपॅथी? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम आस्किंग? कौन सा रिसर्च होना चाहिए होम्योपैथी में, किस टाइप का रिसर्च होना चाहिए? एक तो शिवानी ने बोला कि हाँ उसमें मेडिसिन, हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन। Lakshmi has said about the disease, how to treat diseases in homeopathy. Which type of research do we think in need to do in homeopathy? रिसर्च जैसे जैसे सल्फर टीनिया में कैसा वर्क करते हैं या फिर डायबिटीज में, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन Disease और या specific फिर research, हाँ। ये। हम्म। और मेडिसिन आणि पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स म्हणजे कसं रिलेशन आहे, किंवा म्हणजे दुसऱ्या मेडिसिन मध्ये समजा काही मेडिसिन्स मध्ये पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स म्हणजे त्या पण ते दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये दिलं तर काय होऊ शकतं दुसऱ्या कंडिशन मध्ये? I'm not getting what you are saying. म्हणजे पर्टिक्युलर म्हणजे प्रत्येक मेडिसिनची पॅथॉलॉजिकल कंडिशन आहेत, म्हणजे त्या त्या पॅथॉलॉजी मध्ये हे होतात.
म्हणजे वापरतात, तर मग ते म्हणजे त्याच पॅथॉलॉजीमध्ये का वापरतात म्हणजे मोस्टली, किंवा मग वापरलं तर काय रिझल्ट येतो, किंवा ओके, अदर जे पॅथॉलॉजीज आहेत त्याच्यामध्ये जर वापरतात. आय अंडरस्टूड. आणखी एनीथिंग? और जो कोई ऐसा नहीं पूछ सकते, दे कैन आस्क इन चैट बॉक्स आल्सो, दे कैन आस्क, आप टाइप भी कर सकते हो, और आपका ओपिनियन जो है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च डू वी नीड इन होम्योपैथी। चलो वो रिसर्च के बारे में बाद में बात करते हैं. सो एक क्या क्रिटिसिज्म क्या होता है होम्योपैथी के ऊपर? अनसायंटिफिक आहे म्हणून. हाँ, वो सुडो साइंस है एक. आणि आणि की फक्त प्लासिबोज वापरले जातात, त्यामध्ये मेडिसिन काही नाहीये असं. और स्लो ऍक्टिंग, हम्म, स्लो ऍक्टिंग म्हणजे लवकर रिझल्ट येत नाही. डिले. ओके. आणखी मेडिसिनचं ऍग्रिवेशन होतं. हम्म, और मेडिसिन जास्त लोकांमध्ये पोहोचले नाही, त्याच्यामुळे काही जणांना काही माहितीच नाही त्याच्याबद्दल. सो क्रिटिसिझम वी आर, दॅट इज द प्रॉब्लेम ऑफ अस, की आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलो नाही किंवा गेलो नाही, तो एक वेगळा टॉपिक आहे. बट लोक आपल्याला क्रिटिसाइज काय करतात, की होमिओपॅथी अशीच आहे, होमिओपॅथी तशी. जसं एक फॉर एक्झाम्पल सांगितलं ना, होमिओपॅथिक सुडो सायन्स आहे, हे सायन्सच नाही आहे, लाईक दॅट. आणखी असे काय काय क्रिटिसिझम तुम्ही ऐकलेले आहेत? फार ऐकायची गरज नाही, आपले स्टुडंटच क्रिटिसाइज करतात ना. ते काय क्रिटिसाइज करतात ते सांगा. व्हॉट होमिओपॅथिक स्टुडंट क्रिटिसाइज टू होमिओपॅथी? तुमचे फ्रेंड्स होमिओपॅथीला काय प्रत्येकाला रिझल्ट येत नाहीत. सो म्हणजे स्टँडर्डायझेशन नाहीये, की प्रत्येक केसमध्ये रिझल्ट येईल असं सांगता येत नाही. यू डोंट हॅव शुअर अबाउट द रिझल्ट इन ईच अँड एव्हरी केस, आहे ना. तर अक्यूट डिसीज मध्ये होमिओपॅथी काहीच काम करत नाही. येस, इन अक्यूट डिसीज होमिओपॅथी डझंट वर्क. आणखी होमिओपॅथिक डॉक्टर रिस्क घेत दे कांट टेक रिस्क. आणखी so it's okay. That is the thought that you are thinking about. What type of criticism we face in homeopathy. We'll discuss the common criticisms. एक तर होमिओपॅथिक इंडियामध्ये तो एक कॉमन आहे, की होमिओपॅथिक डॉक्टर्स पहिल्यांदा डिसीज वाढवतात आणि मग नंतर कमी करतात. हा एक खूप मोठा क्रिटिसिझम होमिओपॅथिक कम्युनिटीवर होतो. सेकंड थिंग काय होते, की जसं ॲक्यूट डिसीजमध्ये आपण ट्रीट करू शकत नाही. सो असा एक कन्सेप्ट आहे, की ॲक्च्युली जसं आता गणेश म्हणाल, की कॉमन लोकांना होमिओपॅथी माहीतच नाही, त्याच्यामुळे तो नॅचरली त्या लोकांना दे आर नॉट अवेअर अबाउट दॅट. अँड द क्रिटिसिझम लाईक रिस्क टेकिंग इज नॉट जस्ट, इट इज नॉट अ वॉर. हे काही युद्ध नाही आहे, की वी नीड टू टेक रिस्क ऑल द टाइम. सो बिकॉज रिस्क टेकिंग टेंडन्सी अँड द मेडिसिन म्हणजे रिस्क घेण्याची जी एक टेंडन्सी असते, ती इमर्जन्सी केसेसमध्ये असते. की फॉर एक्झाम्पल समवन इज गॉट स्ट्रक विथ फॉरेन बॉडी. सो अशा वेळी तुम्हाला त्याचं लाईफ सेव्ह करायचं, तर रिस्क घेऊन तुम्हाला काही ना काहीतरी करावं लागतं. इट इज अ मेकॅनिकल एफर्ट्स. फॉर एक्झाम्पल समवन इज हॅव्हिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. सो he become pulseless. So at that time you need to do the CPR and all these things. So these are the life saving methods. आणि त्याच्यामध्ये
एव्हरीबडी हॅज टू बी एक्सपर्ट. म्हणजे ह्याच्यासाठी तुम्ही ते EMS नावाचा कोर्स करून घ्या, देन यू विल गेट एक्सपर्ट इन दॅट. की हा ॲलोपॅथी आणि होमिओपॅथीचा पार्ट नाहीये, की तो कॉमन पब्लिकला सुद्धा ह्या गोष्टी आल्या पाहिजेत. सो दॅट इज द डिफरंट आस्पेक्ट. विल डिस्कस सम टाइम्स अबाउट दिस टॉपिक. म्हणजे हा नवीन टॉपिक सुचला मला, सो आपण नंतर त्याच्यावर डिस्कस करू. अँड मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाईड एक क्रिटिसिझम होमिओपॅथीमध्ये होतं, की एक कॉमन क्रिटिसिझम काय, की इट इज द होमिओपॅथिक मेडिसिन्स ॲक्ट लाईक अ प्लासिबो. म्हणजे हा प्लासिबो इफेक्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे, की थोडा आपल्या अपर लेवलला जेव्हा आपण सांगतो की नाही होमिओपॅथिक वर्क करते, होमिओपॅथिकमध्ये खूप छान रिझल्ट येतात वगैरे वगैरे, सो दे सेड अबाउट दॅट इट इज अ प्लासिबो इफेक्ट. आणि असे खूप सारे रिसर्चेस होतच नाहीत होमिओपॅथीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल एक कॉमन रिसर्च टेंडन्सी असते की डबल ब्लाइंड स्टडी. म्हणजे हा एक स्टडी. आता डबल ब्लाइंड स्टडी कशासाठी असतो, की जसं समवन सेड दॅट वी नीड टू डिसीज बेस्ड रिसर्चेस, जसं तुम्ही UG मध्ये किंवा तुमच्या PG मध्ये थेसिसमध्ये करता. सो दे हॅज टू बी यू मस्ट हॅव टू डू इट ॲक्च्युअली. मग तुम्हाला कळेल की खरंच ते काय काम करतंय का नाही. म्हणजे ह्याला डबल ब्लाइंड स्टडीचे जे रिसर्च आहेत ते होमिओपॅथीमध्ये पूर्वी होत नव्हते, झाले पाहिजेत. आणि ते होण्यासाठी जसं आपण पॅथोजेनिसिटी, पॅथॉलॉजिकल ॲक्शन ऑफ ड्रग, ॲफिनिटी ऑफ ड्रग हे लक्षात आल्यानंतर आपल्याला डिसीज टार्गेटेड, जसं डायबिटीसमध्ये कुठले मेडिसिन्स स्पेसिफिक येऊ शकतात, किंवा विच डिसीजमध्ये कुठले कुठले आणि का ते स्पेसिफिक आहेत. rather than disease we need to find out the symptom setup. We have to introduce a new age therapeutic system, that is symptom based therapeutics. म्हणजे हा सेट ऑफ सिम्पटम असेल तर ह्याच्यासाठी ही स्पेसिफिक रेमेडी आहे, आणि हा दुसरा सेट ऑफ सिम्पटम असेल. फॉर एक्झाम्पल, लास्ट टाइम आय सेड अबाउट दॅट वेअर समवन इज कंप्लेनिंग अबाउट द रनिंग नोज, sneezing, allergic rhinitis, and mostly he wake up in the morning with a lot of sneezing and runny nose. Then at the bedtime, in the night, he has nasal blockage. This kind of setup has and have a dust allergy, smell allergy, hypersensitivity, irritability. This type of setup needs to be a nux vomica. अँड अशा सेटअपचा जो सिम्टम्स बेस तुम्ही जर घेऊन गेलात, अँड यू मस्ट हॅव अ स्पेसिफिक कॅटेगरी ऑफ ड्रग, दॅट इज अ नॅक्सॉमिका. असे डिसीज स्पेसिफिक रिसर्च किंवा सिम्टम स्पेसिफिक रिसर्च आपण कंडक्ट केले पाहिजेत. आणि डबल ब्लाइंड स्टडी मीन्स व्हॉट, की आपको 50, 100 वॉट एवर मे बी दिस योर सैंपल, आप लोगों को 50 में से कुछ पेशेंट को मेडिसिन देना होता है, कुछ पेशेंट को प्लासिबो देना होता है, और उस दोनों का रिजल्ट वेरी करना पड़ता है कि प्लासिबो का इफेक्ट है क्या, मेडिसिन का इफेक्ट है. और किसी पेशेंट को वो नहीं बोलना होता है कि किसको मेडिसिन दिया है और किसको प्लासिबो दिया है. तो ये रिसर्चेस होने चाहिए थे, तो वो हो रहे हैं होम्योपैथी में. ये लोगों को पता नहीं कि होम्योपैथी में इतने रिसर्च हो रहे हैं. तो ये रिसर्च कैसे हो रहे हैं, तो आप जब बोलते हैं ना कि मुझे मार्केटिंग करना है क्या, तो आपके जो फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, वहाँ से आप जाइए. आप पबमेड है या बहुत सारे जर्नल्स है, उसमें जो भी रिसर्च है, जो भी साइंटिफिक है, हमारे GPH को मैच करते हैं, जेन्यून हनीमनीन होम्योपैथी को वो सूट करते हैं, तो उनको पिक कीजिए, उनको पढ़िए और आपके पोस्ट डालिए, तो लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ होम्योपैथी में रिसर्च हो रहा है. मैं आपको एक पोस्ट बताता हूँ कि एक्चुअली होम्योपैथी में रिसर्च होता है क्या नहीं, वो लोगों को पता नहीं है. जे टाइम्स ऑफ इंडिया की पोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ की ऐसे रेग्युलरली मीडियामध्ये, प्रिंट मीडियामध्ये, सोशल मीडियामध्ये ते पब्लिश होत असतात वेगवेगळ्या चॅनल्सनी, की कुठल्या डिसीजमध्ये होमिओपॅथी काम केलं. टाइम्स ऑफ इंडिया. सो इन द टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा अशा खूप साऱ्या जसे न्यू स्टडी शेड्स लाईट ऑन द इफेक्टिव्हनेस ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन. जसे जसे आयुषमध्ये किंवा CCRH जे आहे, होमिओपॅथिक सेंट्रल काउन्सिल ऑफ रिसर्च इन होमिओपॅथी, ह्याच्यामध्ये आता डबल ब्लाइंड स्टडीलाही परमिशन मिळत आहेत. बट वी लॅकिंग इन द ॲक्च्युली त्याचा प्रोसेस काय आहे, त्याचं फंडिंग किती आहे. आणि दुसरा एक खूप मोठा आस्पेक्ट आहे होमिओपॅथिक रिसर्च लॅक करण्याचा, की सॅम्पल साईज खूप स्मॉल असते.
कमर्शियल लेवलला रिसर्च होत नाही, जसं की समजा मोठ्या मोठ्या फार्मास्युटिकल कंपनीज रिसर्च करत नाहीत. आपल्या होमिओपॅथिक कंपनीज रिसर्च फक्त त्या कॉम्बिनेशन्सवर करतायत किंवा त्याच्यावर कॉन्फरन्स घेत आहेत. बट दे मस्ट हॅव टू डू द रिसर्च व्हेरी ऑथेंटिकली, बट अनफॉर्च्युनेटली इज नॉट हॅपनिंग. जसं अदर लोक जेव्हा ह्याच्यामध्ये सायंटिस्ट ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतील तसं हळूहळू होत आहेत. सो विच टाईप ऑफ रिसर्च दे आर डुईंग and how it helps to homeopathy, then we will get the flourishness of homeopathy. आणि होमिओपॅथीला लोकांना माहित होईल की हा होमिओपॅथिक इज डॉक्टर्स आर डुईंग वेल. सो असे डिसीज स्पेसिफिक किंवा सिम्पटम स्पेसिफिक रिसर्च डबल ब्लाइंड स्टडी तुम्हाला स्वतःला प्रिपेअर केलं पाहिजे. हाऊ यू आर गोइंग टू प्रिपेअर युअर सेल्फ इन फ्युचर. सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू नाऊ, बट जस्ट फाइंड आउट और फोकस टुवर्ड्स एनी सिंगल डिझीज और सिंगल सेट ऑफ सिम्टम्स. कुठलाही सिम्टम्स सेटअप्स आपण शोधून काढा आणि त्याचे जे केसेस आहेत तुमच्याकडं, 5 केसेस असतील, 10 केसेस असतील, 50 असतील, आणि त्याचा एक डेटा मेंटेन करा. आणि फ्युचरमध्ये जेव्हा तुम्हाला तो स्पेसिफिक रिसर्च करायचा आहे किंवा तुम्ही PG मध्ये जाताल, सो यू आर एबल टू डू दॅट काइंड ऑफ रिसर्च इन दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स रिलेटेड रेमेडीज. म्हणजे तुम्हाला त्या रेमेडीची ॲफिनिटी कळेल, पॅथोजेनेसिस कळेल आणि सगळंच कळेल. आणि त्या केसमध्ये तुम्ही डबल ब्लाइंड स्टडीनं रिझल्ट दिल्यामुळं ॲटोमॅटिक पेशंटला रिझल्ट यायला लागतील. आणि डबल ब्लाइंडमध्ये पण वी आर गेटिंग गुड सक्सेस. इन फ्युचर वी आर प्लॅनिंग टू डू द रिसर्च इन टीनिया फॉर स्पेसिफिक ड्रग. वी आर जस्ट ट्राईंग टू find out how this process, these protocols are conducted by CCRH, and then we will do this kind of research on the tinea, that is disease specific result. And this is our work. ये जो वर्क है डबल ब्लाइंड स्टडी, ये डॉक्टर और या तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन दोनों का काम होता है. या नाउ डेज आवर इंस्टीट्यूट्स हैव सच टाइप ऑफ कैपेसिटीज, फंडिंग टू डू सच टाइप ऑफ रिसर्च. आणि डबल ब्लाइंड स्टडीमध्ये नॉट ओनली इफ यू आर गोइंग कंडक्ट द रिसर्च ऑन डायबिटीज, so there is not only homeopath but some diabetologists are also involved, ethical committee is also involved, that खरंच हा रिसर्च होत आहे का नाही, याच्यामध्ये काय चाललंय, असे खूप सारे रिसर्च होमिओपॅथी मध्ये झालेले आहेत. अँड यू मस्ट हॅव टू पुट इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी. लोकांपर्यंत हे रिसर्च जात नाहीत, दॅट्स वाय दे आर नॉट अवेअर अबाउट द होमिओपॅथिक रिसर्च. आणि दुसरा एक रिसर्च असतो की दॅट इज द सायन्स अँड होमिओपॅथी. हा खूप एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू आहे. US मध्ये डॉक्टर रँडी होते. सो ही हॅज कंडक्टेड hundreds of seminars to show homeopathy is a pseudoscience, and with charging 1000 rupees for that session. इतके पैसे घेऊन त्यांनी वर्ल्ड US मध्ये किंवा युरोपियन कंट्रीजमध्ये होमिओपॅथी फेक सायन्स आहे, होमिओपॅथीमध्ये काही नाहीये, असे रिसर्च केले आणि खूप साऱ्या गोष्टी त्यांनी सांगत असायचे लोकांना. सो रिसेंटली जस्ट आय सॉ वन पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आणि त्याच्यामध्ये पण असेच काही क्वेश्चन होते की ह्याच्यात रिसर्च नाही, ह्याच्यात डबल ब्लाइंड स्टडी नाही आणि ह्याच्यात रिझल्टच नाही. सो अशा वेळी आपण त्यांना आन्सरेबल राहिलं पाहिजे. सो मग अशा गोष्टी जर आपल्याला डिफेंड करायच्या असतील तर कुठले रिसर्च झाले पाहिजेत. मी तुम्हाला आणखीन एक इंटरेस्टेड पोस्ट शेअर करतो, व्हिडिओ, जो ऍक्च्युअली इंडियामध्ये होत नाहीये पण इंडियाच्या बाहेर होत आहे. तो होमिओपॅथिक रिसर्च एपिसोड 1. An integral part of any system of medicine. But is this true for homeopathy? Research is an integral part of any system of medicine, but is this true for homeopathy? Have any studies been done on the efficacy of homeopathy? What types of challenges do researchers face? Let's take a closer look. Well, it's so much diluted that we start to wonder if there's really something in there.
So, if it works, that's great for you, but it's thanks to the placebo effect. Well, for me, it's charlatanism, kind of like you're taking natural products and you're transforming them, on which we've done no studies whatsoever, and we're basing ourselves on I don't know what, and we're being told that it's good. Well, both sides of the coin, it's make believe or it's something very good. I think it's up to us to make the choice. I think it's one of the biggest myths about homeopathy that people get the impression there's no scientific evidence or research that's been done on homeopathy, and that's just not the case. We have a fair bit of scientific research that's been done of all sorts of different kinds. We have clinical research studies that have been done to look at what happens to patients when they're treated with homeopathy and see what kind of clinical benefits they get from the treatment, right through to laboratory studies that have been testing the remedies on plants, on tadpoles, on white blood cells, just to kind of see the action of the homeopathic medicines themselves. Homeopathy is really based on dilutions. Dilutions are in aqueous solutions, well, alcohol and water mixtures. And really the indication is that it has to do with really an effect of water, new properties of water. That's why we call the lab Water Research Lab, because we're really looking at these new properties of water. And so we're setting up the lab in Germany, in Heidelberg, a very prestigious university in Germany, and to really answer these questions about properties of water, deep fundamental questions that are related to the mechanism of action of homeopathy. So in terms of the mechanism of action of homeopathy, we know it's not going to be standard biochemistry. And this is something that really appealed to me as a physicist. We're looking at new properties of water. One of the most useful types of research that's been done on homeopathy is just tracking patient outcomes. So this is what you call a real-world effectiveness study. And just to give one example of that, in the UK, there was a homeopathic hospital in a town called Bristol where they tracked 6,500 consecutive patients over 6 years and just assessed what happened to those patients. And they found that 70% of those patients reported clinical benefit from homeopathy, and 50% of them said this was major health improvement. So that's very simple research that tells both decision makers and health departments and patients what they need to know. Some people get the impression that homeopathy is just a placebo effect. They think that you take a pill and you think you're going to get better, so that's actually just what makes you get better. There's no real medicinal value to the medicines, but that's not what the science is showing us. There's a really interesting study that was done on a research farm in the Netherlands where they were testing homeopathic medicines in farming situations, such as treating piglets for diarrhea. So what we had in this experiment was they took 52 pregnant sows and they gave them either a homeopathic medicine or a placebo, and then they measured how many of the piglets they produced got diarrhea or not. And what they found was out of these 525 piglets that were produced, the group that was given the homeopathic medicine had 6 times less diarrhea than the group that was given the placebo. Now, that shows it cannot be a placebo. These are animals, they don't know what they're taking for sure, and that is how you test under scientific conditions if it's a placebo effect or not. So in terms of research in homeopathy, we have some very interesting results, very positive results coming out of clinical trials. However, one of the major problems in homeopathy is that we don't quite understand how it works. We know that it works, but not how. So therefore, there's real demand right now for more fundamental research, looking at the physical chemistry of the action of the remedies themselves, trying to understand how they work from first principle, from physics and chemistry. That's one of the big challenges that we have in the field right now. So these kind of researches are going on across the world. हर जगह ये research हो रहे हैं, and these peoples are trying to prove yes, actually homeopathic medicines are not the placebo effects, they actually works. So for this reason we must have to keep these results in front of community, students, the colleges. ये हमें पता नहीं है कि actually ऐसा research हो रहा है या नहीं हो रहा है. Recently in Bede College some researches are also happened about how the action of homeopathic medicines on the eggs, that is on the embryo,
ऐसे रिसर्च होते हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं. सो इसका जो एस्पेक्ट है, ये दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग टू डबल ब्लाइंड स्टडी. यानी कि आपको पता नहीं है, ये प्रूव करता है कि ये सूडो साइंस है क्या प्लासिबो इफेक्ट, सॉरी प्लासिबो इफेक्ट है या एक्चुअल इफेक्ट है. इसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक अशा लोकांना मेडिसिन द्यायचे. फॉर एक्झाम्पल, वी हॅव प्रिस्क्राइब द मेडिसिन ऑन द एनिमल्स. दे डोंट नो अबाउट दे हॅव प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑर नॉट, अँड स्टील दे आर शोईंग द रिझल्ट इन देअर एलिमेंट्स. म्हणजे ज्या डिझिजेससाठी वी आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन्स. सो हाऊ दिस मेडिसिन्स, होमिओपॅथिक मेडिसिन ॲक्च्युअली वर्क्स ऑर नॉट. सो त्याच्यामध्ये फिजिक्स, त्याच्यामध्ये केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, नॅनो फिजिक्स. So every biologist, genetist, so every research is going on across the world, and this type of results are happening, and you must have to show to the your colleagues, your friends, those are homeopaths, and also the patients and the communities on your social media post. हे शेअर करा. तुम्ही यूट्यूबला जा, तुम्हाला ह्या व्हिडिओज दिसतील, सो यू कॅन शेअर विथ ॲज मच ॲज युअर फ्रेंड्स. सो असे रिझल्ट्स होत आहेत. Along with that, there is some other kinds of research that we must have to understood. As Master Hahnemann said about the miasm theory, actually this theory works or not, ह्याच्यावर पण खूप सारं डाऊट्स असतात की what actually Master Hahnemann said about this. सो ॲक्च्युअली द लॅटेंट मायझम, म्हणजे आपण नेहमी म्हणत असतो की कंजेनायटल मायझम किंवा लॅटेंट मायझम. अँड आय ऑलरेडी सेड मेनी टाइम्स about the epigenetic theory. Epigenetic theory means it is just science that about the genetics. Genetics मध्ये काय होत असतं की whenever you see some genetic disorder, there is some genes are involved to modify certain kind of disease, like there's thalassemia, major, minor, color blindness, so many kind of genetic disorders. So या diseases मध्ये खूप सारे जीन्स मॉडिफाय होत असतात. पण इपिजेनेटिक्स मध्ये काय होतं की इपिजेनेटिक्स इज ट्रान्सफॉर्मिंग द मेमरी ऑफ युअर अँसेस्टर्स. म्हणजे आपल्या अँसेस्टरनी जे ट्रॉमा, जे इन्फेक्शन्स सफर झालेले आहेत, त्या सफरिंग्स, ते ट्रॉमा आपले नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जशाला तसे कॅरी फॉरवर्ड होत असतात. अँड वेन द अपॉर्च्युनिटी गॉट्स, वी गेट इन्फेक्टेड और वी गेट सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इलनेसेस, ॲज मास्टर सेड इन द लॅटेंट मायझम अँड क्रॉनिक मायझम थेअरीमध्ये. आणि म्हणजे हे सगळं डिटेल एक्सप्लेन केले. त्याच्या रिलेटेड खूप सारे रिसर्च आहेत इपिजेनेटिक मध्ये. आय विल शो यू द सम एक शॉर्ट व्हिडिओ ऑफ दॅट व्हॉट ॲक्च्युअली इपिजेनेटिक इज. जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड. See this video. So say you have a clone or a secret identical twin, because you know that a twin or a clone is a genetically identical person to you, which is crazy, but it's true. Anyway, so you have this clone or your twin or what have you, and your parents decide that it's too much trouble to keep both of you. And so they give your clone to a kind of sketchy traveling circus. Now, I know your parents probably wouldn't actually do this, but just roll with me for a minute. So for the purposes of this example, let's just say that you grew up living a normal suburban American life, while your clone grew up with less stability and less access to nutritious food and less education, but more exercise and more access to sword swallowers and bearded ladies. And let's say you guys are 50 years old or whatever, you get together and have some lunch. So you're sitting there across the table from your clone. What do you think you see? Well, for starters, Clone probably has a tattoo on its face. And if Clone had stayed in the circus, Clone probably, professionally rides a unicycle over a tightrope, so Clone is probably in pretty good shape. But then again, Clone probably smokes cigarettes and probably was malnourished as a child, so might be slightly shorter than you. By the same token, let's say that you've been eating Sonic tater tots 5 days a week since 1992, so you're looking a little bit tubby. Plus, you spent the last 20 years in a really stressful job that puts you at risk for all kinds of weird health complications. So, at 50, you and Clone would probably look pretty different from one another. But it turns out,
you don't just look different, you actually have become different. Now, if some scientists looked at your genetic code, they would say that your DNA was still exactly the same as that of the person. That is to say, if your genome is a paragraph, all of the letters would be in the exact same order. But on another level, there would be a huge difference. And if we extend this metaphor, we can say that the letters are in the same order, but the spaces and the punctuation are all in different places. Of course, completely potentially changing the message of that paragraph. The study of this genetic punctuation that I'm talking about is called epigenetics, which literally means above genetics. The epigenome doesn't change your DNA, but it decides how much or whether some genes are expressed in different cells in your body. Epigenetics looks at what happens to your genes over the course of your life and whether those changes could be passed down to your children or even your grandchildren. So here's the way epigenetics works. You have billions of cells in your body, and they each contain your DNA, the same exact blueprint of your genetic code. But just because they have the DNA doesn't mean that they know what to do with it. They need outside instruction from these little carbon and hydrogen compounds called methyl groups. The way these methyl groups control the genome is by binding to a gene and saying, do not express this gene. The methyl groups bind differently to your genome in a skin cell versus, say, a tongue cell or an eyeball cell. And that is one of the ways that a cell knows that, hey, I'm a skin cell, or hey, I'm an eyeball cell, or hey, I'm a muscle cell. In addition to methyl groups, epigenetics is also controlled by histones, which are proteins that are basically the spools that DNA winds itself around. Histones can change how tightly or loosely the DNA is wound around them. If they're more loosely wound, the genes can express more, and if they're more tightly wound, then they express less. So whereas the methyl groups are more like a switch, the histones are more like a knob. Every cell in your body has a distinct methylation and histone pattern, and that is what gives every cell its marching orders. Think of your genome, the DNA, as the actual hardware of the computer, while the epigenome is more like the software, which tells the hardware what to do. The genome is what's going to be doing all the work, but the epigenome is going to be telling it what to do. So the hardware of your DNA is going to be the same throughout your entire life. But these epigenetic tags do change throughout your life, and they decide what genes get expressed or not. Now, epigenetic information in a cell isn't permanent. It can change throughout your life, and it can be hereditary, and it can change over time, especially when your body is going through a lot of changes, like say during puberty. A bunch of methyl groups kick in and they're like, okay, so you guys over here, you're gonna have to start growing hair, and you guys over here, I really need you guys to get behind giving this guy some really horrible acne. Or like when you get pregnant, which hopefully I won't, but when you do, your epigenome has to be like, all right guys, everything's about to get a whole lot bigger in here, and we're gonna have to pass something the size of like a Merriam-Webster's dictionary through that little pipe over there, so let's get this thing done. But it's not just these dramatic times when the epigenome is changing, it changes subtly throughout our entire lives. And it changes based on a lot of environmental factors, like what we do, what we eat, what we smoke, and how stressed out we are on a daily basis. Scientists have found that things like a bad diet can actually lead to methyl groups binding to the wrong place and making mistakes. And with those bad instructions, cells become abnormal and become a disease. And then basically all hell breaks loose and you get cancer or something. Epigenetics is a very young science, though we've known about the epigenome since the 1970s. It's only in the last 20 years that we've even known what effect these epigenetic tags are having on our DNA. And even after they got all that business straight, scientists still thought that all of our epigenetic tags were stripped off of our genome before they were passed on to our children. So if you started smoking 10 packs a day when you were 10 years old, that would certainly be a horrible health decision for you, but you wouldn't necessarily be harming your unborn children in any measurable way. However, the thinking on that is changing pretty rapidly, because it's true that a lot, even most of the epigenetic information from a parent is stripped off of the embryo's genome in the first few days, and fresh ones are created specifically for this new person. However, some of these tags get stuck on the genome and are passed down from generation to generation. And it just so happens that the more they study this, the more it looks like bad epigenetic information is being passed from generation to generation. And this is a whole new way to think about how we pass information between generations. Your grandmother was making dietary decisions that affect you today. As we experience all of these new strange epidemics, diabetes, autoimmune disorders, cancers that weren't appearing in previous generations, it's starting to look like these may be caused by epigenetic information passed down from our parents. I know, it's such an unbelievable buzzkill. There is no point in our lives when we can do anything without guilt anymore. The discovery that the environmental factors a parent experiences can be passed down from generation to generation was sparked in the 1980s. And this happened when some scientists were looking at the birth and death records of some people who lived in 19th century Sweden. This is a weird place to find a genetic revolution, but there it is. It wasn't just any place in Sweden. It was in Norrbotten,
which is the northernmost county in Sweden, which is literally in the Arctic Circle. And despite the fact that Norrbotten was literally the worst place you could possibly choose to live in Sweden, there were some people living there in the 1800s. And they were completely cut off from the rest of the world. Let me clarify. These people were isolated. Like, if they didn't have a good crop year, people died. No, it wasn't ideal, but, you know, they didn't ask me my opinion, so I'm not giving it. So anyway, these people subsisted entirely on what they grew and the animals that they raised. And like I said, sometimes they starved. But sometimes they had huge, bountiful years of plenty. And when that happened, people totally went ate crackers. I mean, of course they did, because they were so freaking hungry, and then all of a sudden there was all this damn food everywhere. Anyway, there was a public health specialist who was looking at the effects of the people who grew up in the really bad starving periods of time versus the people who grew up in the eat all you can at the smorgasbord years. And you might already be guessing what they found out. People who went from relatively slim pickings to feed your face until you have to barf and then do it all over again in a single season, those people died an average of 6 years sooner than their starved out counterparts. And you know what sucks? So do their kids. And so do their kids' kids. Boo epigenetics. So, of course, now we all know, and we're all going to stop doing unhealthy things starting today. Unless the damage is already done. The damage is almost certainly already done. But hey, epigenetics brings good tidings along with bad ones. For instance, we now know that certain types of cancer are caused by misplaced epigenetic tags. And scientists are now developing drugs that can silence the bad genes that were supposed to be turned off in the first place. Additionally, until recently, we thought that genes were the end-all and be-all of who you got to be. They were your blueprint, and you couldn't escape them. This outlook is not just kind of depressing, it also leads to a yucky sort of social prejudice. Because when you look at data without considering social and epigenetic factors, it might look like people with less money are less intelligent. So just like 15 years ago, there were scientists saying things in public, mind you, like some people just have good genes for intelligence, and it just so happens that the poor people don't. Oh, it's so sad. Too bad, poor people. But you have bad genes. Well, it turns out that that is not even a little bit true. Not only are there a huge variety of social factors that affect how well people do on intelligence tests, but a genetic trait is also not just a product of genes, it's also a product of environment. Any one person's genome is determined by any number of decisions made by any number of their ancestors. And right now, you are making decisions that are going to affect people who are alive long after you're dead. No pressure or anything. And so I'm glad you've watched this, because when you and your clone are in your 60s and you sit down, have lunch, and he brings his son and his son has a tattoo on his face, he did not inherit that from you. This is Hank Green for The Sci Show. We hope you learned something. So see this result, as Master said about the epigenome और epigenetics. ओवरऑल इसका इसेंस मैं बोलता हूँ आपको कि ओवरऑल इसेंस क्या है कि वी आर कैरी फॉरवर्डिंग द ऑल मेमोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स. अब ये होता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो भी बैड चीज़ें की है वो सब हमको गिफ्ट में मिल गई है. अब नाउ इट इज़ आवर टाइम टू गिव गुड गिफ्ट टू आवर नेक्स्ट कमिंग जीन्स. हमारे जो भी आने वाले जनरेशन है उनको हम अच्छे जीन्स देना चाहिए, अच्छी मेमोरी देनी चाहिए, एपिजेनेटिक मेमोरी देनी चाहिए. तो इसके लिए आप लोगों को पता होगा तो मास्टर हनीमन सेड अबाउट दैट व्हेन वी कैन यूज अ सल्फर इन प्रेगनेंसी सो इट कैन रिमूव द टैग्स. वो हम उसको इंटरप्रेट ऐसा कर सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं ना कि उसको साइलेंस करेंगे वो टैग को. तो हम जो अब एवरी 3rd मंथ को सी पोटेंसी में जो सल्फर देते हैं किसी को, सो ऑटोमेटिकली आपके जो भी बैड गिफ्ट्स आपने क्रिएट किए थे, बैड डिसीजेस आपने क्रिएट किए थे, आपके आने वाले जनरेशन को वो नहीं होने वाले. वो that is the clear cut evidence of Master Hahnemanian miasmatic theory, congenital और latent miasm theory. ये हमें समझ में आना चाहिए, हमको इसको कोरिलेट करना है. अभी बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ मास्टर हनीमन सेड वेरी सिमिलरली लाइक दैट. डिस्कवरी पे एक नासा साइंटिस्ट है, उसने भी उसके ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं और उसमें भी मास्टर हनीमन का भी जिक्र हुआ है कि ही सेड ही टोल्ड अबाउट द सच टाइप ऑफ थिंग्स ऑफ एपिजेनेटिक्स. और जो भी हमारे ट्रॉमा है वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर है, फूड फैक्टर है, हमारे बैड मेमोरीज है या गुड मेमोरीज. ऐसा नहीं कि गुड मेमोरीज बैड मेमोरीज ही चले जाते हैं. तो वॉट एवर यू आर डूइंग सो इट इज कॅरी फॉरवर्डिंग ॲज इट इज. जसे त्यांनी सांगितले की DNA तशाला तसं जातो, फक्त सॉफ्टवेअर मॉडिफाय होत चालत जातं पुढं जाऊन.
आणि सॉफ्टवेअर कसं मॉडिफाय होतं, तर आपण जसं की जे जे मेमरीज आपण आत्ताच्या काळामध्ये आपण स्वतः करू त्या ॲटोमॅटिकली, जसं की तुम्ही बॅड हॅबिट लावली, की तुम्ही सकाळी म्हणजे सेडेंटरी हॅबिटची लावली आणि तुम्ही डायबिटीसच्या मेमरीज क्रिएट केल्या, नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ते सेम क्रिएट होणार आहे. सो द सेम थिंग दॅट वी आर correlating in the myism theory, as he said just now. So this kind of researches are also still going on, and we need to understood the such type of research with the homeopathic concept of myism. और जब हम ये लोगों को बता सके कि यस वी आर डूइंग सेम थिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स, तो लोगों को पता चलेगा कि यस होम्योपैथी इज साइंटिफिक एंड रियली दिस पीपल्स आर डूइंग गुड वर्क. Unfortunately, we don't have such intellectual minds to propagate the homeopathy very perfectly and very genuinely. So another research that I want to show you here about water memory. So many of the homeopaths and also the allopaths and some scientific those people thought about that they are only scientific mind. और ये जो साइंटिफिक माइंडेड लोग होते हैं, दे आर, आई एम वेरी, आई गॉट स्टक विद ऐसे कैसे साइंटिफिक लोग हैं. साइंटिफिक भी बोलते हैं क्योंकि साइंस का एक रूल होता है कि जब तक कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है उस चीज़ को हमें जब तक रिसर्च नहीं आएगा उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. उसके ऊपर रिसर्च होता है जब तक उसको बोल सकते हैं कि हाँ चलो इट इज़ एटलीस्ट आप हाइपोथेसिस बोल सकते हैं. लेकिन सुडो साइंस बोलने का मतलब क्या है कि जस्ट दे आर वेरी बैड काइंड ऑफ पीपल्स, कनिंग काइंड ऑफ पीपल्स, विदाउट, दे आर नॉट साइंटिफिक माइंडेड. कोई भी साइंस मानने वाला है या साइंस को समझने वाला है वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि ये फेक है या ऐसा है. उन लोगों का ये पर्पस होना चाहिए कि हाँ चलो आप लोग ठीक तो करते हो लेकिन ये क्या है एक्चुअली. तो वाटर मेमोरी जो एक्चुअली होम्योपैथिक डाइल्यूशंस के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ आपने एक सब्सटेंस को एवोगाड्रो बियॉन्ड एवोगाड्रोज नंबर, ये कैसे हो सकता है, ये वाटर क्या ऐसा क्या होता है कि वाटर मेमोरी क्या है एक्चुअली में. आप जब उसको सब्सटेंस में इतना डाइल्यूट करते हो तो कुछ तो रहता नहीं. वो अभी जो लास्ट वीडियो हुआ तो आप सब लोगों को पता है, हम बताएंगे वो लास्ट में. लेकिन उसके पहले एक है नोबेल बायोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर ल्यूक मॉन्टेनियर. उनका एक रिसर्च था कि बॉडी में एक मेमोरी होती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो सिस्टम, नॉट ओनली आवर बॉडी, जो भी अर्थ है, अर्थ का आप सिस्टम देखेंगे तो एवरीवेयर इज वाटर, सब जगह वाटर ही वाटर है. आप ड्रिल करो नीचे अर्थ में भी वाटर है, उसके सेंट्रल कोर में भी कहीं ना कहीं वाटर है, एंटार्क्टिका में भी वाटर है, साउथ पोल पर भी वाटर है, हर जगह वाटर ही है. हमारा सी लेवल है, हमारी बॉडी लीजिए, हमारी बॉडी में 70% वाटर है. लाइफ बिगिनिंग जो होती है ओम में तो वो भी एमनियोटिक फ्लूइड में होता है. सब जगह वाटर है, तो वाटर का एक कोई कनेक्शन है. और हमारे महाराष्ट्र में एक बोलते हैं की खूप ज्या गाव 12 गावचं पाणी पिलं. सो 12 गावचं पाणी पिलं म्हणजे काय की एक जस्ट अ मेटाफोरिकल टर्म की हा माणूस वेगवेगळ्या गावात राहिल्यामुळे त्याच्या बॉडीवर, त्याच्या माइंडवर त्या त्या गावचे एक संस्कार झाले. आणि एक गोष्ट आपण विटनेस पण केली असेल की when we drink water from borewells, so we have a very different taste. We have just drink water from a dam also. डॅमचा वॉटरचा एक वेगळा टेस्ट असतो, म्युन्सिपाल्टीचा वॉटरचा वेगळा टेस्ट असतो. दोन सिटी मधले म्युन्सिपाल्टी वॉटरचाही टेस्ट वेगळा असतो. म्हणजे त्या लोकल रिव्हर्स, लोकल त्या भागातलं सॅल्यूट्स, मिनरल्स आणि त्या त्या भागातले होणारे जे काही ॲक्टिव्हिटीज असतात, एन्व्हायरमेंटल चेंजेस असतात, सो ऑल दॅट चेंजेस आर ॲक्सेप्टेड बाय द वॉटर. सो लाईकवाईज होमिओपॅथिक मेडिसिन जेव्हा आपण प्रिपेअर करत असतो, त्याच्यामध्ये समजा सल्फर जर मेडिसिन बनवत असो तर वॉटर काय करणार आहे, जरी तुम्हाला ॲव्होगाड्रो नंबरच्या पुढं सबस्टन्समध्ये दिसत नसेल तर ते वॉटर काय करतं की सल्फरच्या पूर्ण मेमरीला कॉपी करतं आणि इट वर्क्स ऑर इट ॲक्ट्स लाईक अ सल्फर वेन एव्हर वी प्रिस्क्राईब दिस काइंड ऑफ मेडिसिन इन द पेशंट्स. आणि हा रिसर्च जेव्हा ल्यूक मॉन्टेनियरनी यूज केला, सो जी कमर्शियल किंवा इंडस्ट्रियल फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे ॲलोपॅथिक फार्माकोपिया, सो त्यांच्यासाठी खूप थ्रेटनिंग गोष्टी असतात त्या. आय डोंट नो, जो पण कोणी असं छान चांगल्या गोष्टी होमिओपॅथीविषयी सांगायचं प्रयत्न करतात की त्याला ते डिसओन करतात किंवा त्याचं नोबेल प्राईज काढून घेण्याचे हे करतात. आणि त्यांचा जो रिसर्च आहे त्याचा एक छोटासा व्हिडिओ, खूप मोठे मोठे व्हिडिओ येत आहेत पण मी त्यातला एक छोटासा ब्रीफ व्हिडिओ तुम्हाला मी
दाखवतो. Thank you. This will be a short response. In the program, not the same title. Non, no, So, as you probably know, we have been working for several years in detection method using electromagnetic signals from pathogenic DNA. But we found that this technology is a little heavy, doesn't give the complete answer what kind of pathogenic agent is emitting the signals. So we turn back to a very old technique, PCR, polymerase chain reaction, which can be used by almost everybody in laboratory. Discipline is a finite resource. You wake up. But we started more recently from a collaboration with a group of quantum physicists from Italy, mostly in Milano with Emilio Del Giudice in Fondative, who disappeared in 2014, and also Giuseppe Vitiello, who is professor in Salerno University. And they tried to theorize what we were observing in the laboratory. That means the possible role of water in the transmission of DNA sequence by reading of DNA by polymerase. As you know, DNA polymerase in the PCR is Taq polymerase from Thermophilus aquaticus, from a bacterium living in a hot spring. And this enzyme is heat resistant, so that we can heat the DNA double helix, and again the polymerase can work on the new strand opened by this double helix, from this double helix. So this is, I would say, interdisciplinary work, but I must say all the theory comes from our colleagues, quantum physicists, which also belong to some university in the United States. So what we saw is that between the double helix open and the Taq polymerase, there is an intermediate medium, which is water. And so this is the scheme of a paper published last year in the journal Waters, edited by Jerry Pollack, in which they put inside, between the DNA and the enzyme, the water made of dipoles, small dipoles, but they are all organized. This is organized water, as you heard this morning, and this organized water can transmit waves of information from the base sequence of the DNA to the enzyme. So this is a scheme, of course, hypothetical, but
which should work for all kind of polymerase PCR chain reaction, and probably this would explain in the classical PCR why it's so easy to use small oligonucleotides primers of about 20 bases long, and the enzyme, the system finds easily that this small oligonucleotide primer will bind a sequence complementary to it in a random situation in which there are millions of sequences which do not contain that sequence. So probably this is some kind of resonance of tuning, implying waves. But we mostly adapt this technology for the detection of the DNA which was emitting signals, electromagnetic signals, from pathogenic bacteria. So it has to be recalled that in that system, like in homeopathy, we have to agitate very strongly in a vertex system the water. The homeopathic people use that dynamization or concussion. So what we thought was if we could dilute out a dilution of DNA to dilution which there is. So, have you listened what he is saying? He is saying that हे जे सगळे सिक्वेन्सेस घडतात की DNA आहे आणि ज्या वेळेला आपण होमिओपॅथिक मेडिसिन किंवा बॉडीमध्ये जे की त्याच्यामध्ये पॉलिमरेज चेन रिॲक्शनच्या ॲस्पेक्ट्सनं त्याच्यामध्ये ती DNA ची ती मेमरी वॉटरमध्ये जाते आणि एन्झाईम्स प्रिपरेशन बॉडीमध्ये जेव्हा होतं त्याप्रमाणे ते ॲक्ट होतं जी मेमरी कॅरी फॉरवर्ड केली असते आणि ती एन्हान्स कशाने होती जेव्हा तुम्ही सकशन्स देता जे स्ट्रोक्स देतो ना आपण एलेम्पोटन्सी तर आपण ऑलवेज देतो म्हणून तो एक आपला गुड एव्हिडन्स आहे की हां वाय होमिओपॅथिक मेडिसिन एलेम्पोटन्सी वर्क्स. सो अशी जे रिसर्च आहेत आणि ही इज अ ल्यूक मॉन्टेनियर, इट इज अ नोबेल प्राइज फिजिओलॉजिस्ट आणि तो डिसीजवर काम करतो म्हणजे मोस्टली DNA कसे वर्क करतात याच्यावर त्यांचं काम होतं आणि त्यांचा जो आस्पेक्ट होता की होमिओपॅथिकमध्ये हे असं होतं आणि ह्या गोष्टीमुळे त्यांना खूप क्रिटिसिझम झालं. तुम्ही त्याचं ह्याच्यावर पाहू शकता की दे हॅव लॉट ऑफ क्रिटिसिझम्स अबाउट हाऊ यू कन्सिडर होमिओपॅथी इज सायंटिफिक अँड ऑल दिस थिंग्स, असे खूप सारे क्रिटिसिझम्स आहेत. सो फॉरगेट अबाउट दॅट. सो कुछ तो लोक कहेंगे असं म्हणून आपण सोडून द्यायचं. बट वी मस्ट हॅव टू डू आवर वर्क टू प्रोपोगेट होमिओपॅथी सायंटिफिकली. आणि असे जे रिसर्च आहेत ते पुढं नेले पाहिजेत की लोकांपर्यंत गेले पाहिजे. की आता आपण पाहतो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण आस्पेक्ट पाहिला की डबल ब्लाइंड स्टडी ज्या आपल्या लेवलला होऊ शकतात. त्याच्यानंतर इपिजेनेटिक स्टडी पाहिलं जो ॲक्च्युली सायंटिस्ट किंवा जेनेटिशियन्स करतात. आता त्याला आपल्याला कोरिलेट करता आलं पाहिजे. वॉटर मेमरी पाहिलं. देन हे आता यांचं जेनेटिक्स कसं काम करतं, वॉटर मेमरी, DNA आणि मेडिसिन कसं ॲक्ट होतं हा एक आस्पेक्ट पाहिला. कारण वॉटर हा एक खूप इम्पॉर्टंट सबस्टन्स. ह्यांचे डिटेल व्हिडिओ पाहिले तुम्हाला सगळं डिटेल. आता इथं खूप वेळ लागतो, 1-2-3 तासाचे ह्यांचे सेशन्स आहेत लीफ माउंटेनियरचे, पण तुम्ही ते नीट पहा किंवा एपिजेनेटिक्सवरचे पण नीट पहा. आणि लास्ट बट लिस्ट हा एक ॲव्होगॅड्रो नंबर विषयीचा एक क्रिटिसिझम खूप होतं की होमिओपॅथिक मेडिसिन्समध्ये सबस्टन्सच नसतो किंवा त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा मेडिसिन अस्तित्वात राहत नाही किंवा सल्फरला जेव्हा तुम्ही लॉंग टर्म तुम्ही डायल्यूट करता तेव्हा की खूप डायल्यूट केल्यावर याच्यामध्ये काही राहतच नाही, तर मग हे पाणी आहे फक्त. आणि ह्या प्लासिबो ह्याच्यापासून तुम्हाला मेडिसिनचा रिझल्ट कसा येईल, जसं आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की लोकांना असं वाटतं कुठ नाही, लोकांना मूर्ख बनवत आहेत, ह्याच्यात तर पाणीच आहे किंवा काहीतरी. म्हणून मी सांगत असतो की कुठलेही मदर टिंक्चर्स, सल्फर ऑइंटमेंट्स किंवा कुठले टॉनिक्स वगैरे होमिओपॅथी पैसे देऊ नका. कारण लोकांना वाटतं ह्यांच्या मेडिसिनने तर काही होत नाही, असं काहीतरी देऊन लोकांना उल्लू बनवतात. सो डू अकॉर्डिंगली टू द हनीमनियन प्रिन्सिपल्स. सो त्याच्यामध्ये जो एक इंडियन IITians होते की त्यांनी तो रिसर्च केला होता की आणि तो रिसर्च पण खूप बिलियन म्हणजे
डॉलर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट झालेले आहेत. खूप मोठा रिसर्च आहे तो. त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रूव्ह केलं होतं की एक फॅन्सी फोटोग्राफ्स कॅमेरा यूज करून की बियॉन्ड 30 डायल्युशनपर्यंत, कुठल्याही डायल्युशनपर्यंत त्या वॉटरमध्ये नुसती, आता इकडचा सबस्टन्स काय होतं की मेमरीच नाही तर त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल त्याचे मॉलिक्युलर इम्प्रिंट्स दिसत आहेत आणि ते इम्प्रिंट्स आपण फोटोग्राफ थ्रू पाहू शकतो. तो पण खूप सारे डेटा आहे, खूप रिसर्च आहे आणि तो रिसर्च पण मी तुमच्यासोबत मागं कधी शेअर केलेला असेल. पण आज जे आपल्यासोबत जे नॉन GPH आहेत किंवा जे बाहेरचे जनरल पब्लिक आहे जी आज पाहणार आहे, त्यांनाही हे रिसर्चेस माहीत झाले पाहिजेत की ॲक्च्युली होमिओपॅथिक मेडिसिन जरी किती डायल्यूट केलं असलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा बियॉन्ड ॲव्होगॅड्रोज नंबर त्याच्यामध्ये हे दिसतात. बरं, नुसतं दिसतात असं आहे का की त्याचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे, तर मी जे हार्मोसिस थेरी सांगितली होती तो एक मेकॅनिझम आहे की त्याच्यावरचे व्हिडिओ खूप मोठे होते म्हणून मला ते शॉर्टकट तुम्हाला देता आलं नाही. म्हणजे ॲक्च्युली 3 टाईपचे मेडिसिनल ॲक्शन्स असतात की लार्ज डोस फेटल डोस असतो, फिजिओलॉजिकल डोस हा सप्रेसिव्ह असतो आणि जो स्मॉल डोस असतो तो स्टिम्युलेटरी असतो. सो लाईकवाईज होमिओपॅथिक मेडिसिन्स आर व्हेरी लेस अमाउंट, सो दे शोज द स्टिम्युलेटरी इफेक्ट्स. So these actions are actually shown in his experiment by Dr. Jayesh Bellare, and just watch his video and we will conclude after his video. आणि एक लास्ट समरी घेऊ, तुमचे क्वेश्चन्स घेऊ आणि आपण तो एंड करू. हा लास्ट व्हिडिओ पहा, सो विल गेट फॅसिनेटेड थ्रू हिज रिसर्च. So respected friends, it's my pleasure to try and present to you some hard data. And this hard data is in support of our findings that there is a very simple material basis to homeopathic medicines, and that material basis happens to be nanoparticles of the starting material. Right? This is a finding that we've worked on for some years now, and in view of the short time available, I might skip some of the detailed slide which I use on skeptics, but I find none here, so I can touch on the highlights alone. So our interest in nano came about because of their biological importance, and we've been working on nanoparticles in allopathic medicines for drug delivery systems, which got us into Ayurvedic system of medicines and eventually into homeopathic system of medicines. And what we've done in homeopathy is to try and answer 3 basic questions. What is there in the medicine? How did it get there? And how does it act? So these are the 3 answers to these 3 questions, which I'll tell you very quickly. And what we've done is to do a physicochemical characterization and to look at the biological action in cell lines. And here, of course, we are looking at fundamental science. And to touch upon the physicochemical aspect, the process of trituration adds lactose and produces the nanoparticles which eventually will stay behind in the system of medicine. Very analogous to what modern material scientists do by the process of comminution. The second important part of the process is the succussion, which provides not only energy to the system, but it provides a means of separating large and small particles by the process of froth flotation, which I will illustrate a little later. There are, of course, umpteen theories. When you talk about extreme dilutions, does anything remain? And the answer is yes, it does. Theory number 10, which is ours, which says the nanoparticles of the starting material do remain, and here is the evidence for it. So our efforts are to understand this so-called super Avogadro dilution and to relate it to the process of manufacture. And what we've done, here is a 1-slide summary, that we've shown by electron microscopy that these nanoparticles remain. These are nanoparticles of the starting material, and we've shown that they are generated and they stay on despite the high dilutions used. So here are some of the papers which we published, which I'll just skip through, including one in a mainstream ACS journal, Langmuir, and several others. So let me skip through those quickly. The medicines which we've looked at are we began with metallic
systems because they're easy to look at in electron microscopy. We have also moved on to inorganic salt-based medicines. We have not been able to do herbal medicines nor no swords. So our work is restricted to metals and metal salts. Yeah. And we use electron microscopy, which is expensive, fancy camera to produce images of tiny things. And these are the tiny things which we look at here. So you can see these nanoparticles here. So this is like a passport photograph. This is these are the crystallites which light up. It's like an X-ray image or a digital radiograph which shows you the insides of the system. And this is the thumbprint or the fingerprint of the system, which is the electron diffraction pattern, which can uniquely tell you what is the element that is present in that particular sample. So you can get the bright field picture, so to speak, the dark field picture, which gives you the internal structure, and you can get the chemical composition by merely looking at this distribution of dots, which amounts to a fingerprint of the system. And the fingerprint can be looked up in tables like this, much like FBI's database to catch the criminal, and we can figure out who the criminal is. So with this information, here is zinc met 30C, well below Avogadro's. But right here are the particles, here are the crystallites seen, and here is the fingerprint indexes perfectly to zinc metal as per the standard databases, and so on. So there's plenty of evidence here which I'll skip through. We can measure the particle size distribution. Most of the particles are in the 5 to 10 nanometer range, the crystallite size. So we've shown that the particles of the starting material remain. This, of course, was zinc medicine, began with zinc, but we've shown it for several other metallic systems. They contain nanocrystallites. Can we measure them quantitatively? And the answer is yes. With modern tools such as ICP AES and ICP MS, which are tools which are analytical tools, we can see that there is a very definite concentration of picograms per ml, few hundred to few thousand picograms, drops with potency until about 6C, and thereafter it levels out. Each of these is a measurement from different batches, different suppliers, so there is no error in a single, the error of a single measurement is within the symbol, but you can see there is error between manufacturers, between batches of the same manufacturer. How does this happen? We have a theory here which essentially says that the lactose-coated particles froth float when you subject it to succussion. Succussion causes hydrodynamic cavitation. You bang a bottle of liquid and it's going to froth around. The froth carries with it these nanoparticles to the surface, and then in the process of successive dilution, which happens subsequently, whether by a Hahnemannian process or a Korsakovian process, these particles slip into from one dilution to the next, much like the cream on my milk slips into my into my cup of tea, whether I like it or not. This is very analogous to that. So what happens eventually is that these nanoparticles get carried from dilution to dilution. It's only the nanoparticles which froth float to the surface, and in time these bubbles go away within a few seconds or minutes. And how do we know that? We know that because we have done high-speed video photography which shows these particles being generated. This is a sequence of images which is at the bottom of the container. If you look at the top of the container, these nanobubbles remain. We can't see the nanoparticles at this resolution, but they do rise, and you can see that this froth remains for some time. This process of froth flotation not new. Metallurgical engineers and miners have been using it for centuries, perhaps, to beneficiate their ores. The only thing here is that it beneficiates the nanoparticles into the final system. So this lends credence to this hypothesis that froth flotation is responsible, or one of the key steps. We then extended this work into inorganic medicines, where we showed that despite water solubility of even common salt, it turns out that in alcohol-water mixtures, common salt is insoluble. And that's what causes even water-soluble salts to follow the same nanoparticle theory of formation that I just now described to you for metals. And with these inorganic based medicines, we find similar results. Here is the passport photo, here is the X-ray, and here is the fingerprint. And I have tons of data like this, which I won't dwell upon. Tells you that in this medicine there's only sodium chloride present, and so on with many other medicines of this sort. We also see that there is a silica coating that forms, and we have a hypothesis of how the silica actually is deposited chemically. Some of the sodium silicate leaches from the glass walls. It contacts the ethanol solution, where it forms some polysiloxane chains, which then deposits on the particles, on the nanoparticles of the original substance present.
Here is a cartoon which I will skip for brevity and shows, and so all this indicates that there is this silica coat which forms. Last point, last 2-3 minutes is so what? Well, so what is that it doesn't, at these small concentrations, is there any biologic effect? And the answer is yes, there is. How do we know that? We know that because we've studied that in cell lines, and what and this is published also. What it is based on, this concept is based on hormesis, which said that for every substances, small doses stimulate, moderate doses inhibit, and large doses kill, which of course has an analogy with the basic principle of homeopathy as well. So here we see a typical dose response curve, which shows that at large doses things go bad, but there is a dose regime, and this dose regime happens to be in a rather low concentration regime. Sometimes people call it a biphasic response, in which there may be a similar curve at much higher concentration, which most conventional medicines, allopathic medicines, do use. But here we find an action at these low doses which are present in these ultra high dilutions as well. Yeah. This is data now from homeopathic medicines. I should make it very clear that the homeopathic medicines we've studied so far are commercial ones. We've not made any in our lab, bought straight from the market. Anyway, so it shows here that what's on the y-axis is the so-called MTT activity. It shows the activity of the mitochondrial activity in the cells, and the is where it should be, and the control is close to that. Once we start adding these homeopathic medicines and change their dose, we find that there is a dose response curve in which the MTT activity increases significantly. This depends, of course, on the type of medicine, and it depends on the cell line we use. And there is the data has now been published, and we are generating even more data. So to close, then, what I hope I've shown you is that in homeopathic medicines, the nanoparticles of the starting substance remain despite super Avogadro dilution. These nanoparticles have a core shell morphology. There is salt or metal at the core and a mesoporous silica layer on the outside. It is likely that these nano or similar nanoparticles exist with all homeopathic medicines. Titration and suppression are important parts of the process. Hormesis seems to be the biological basis of action on the cell lines that we studied. And above all, it turns out that these nanomedicines are ubiquitous across systems of medicine. In allopathy, they are used widely today for drug delivery, particularly drug delivery relating to anti-cancer drugs. It turns out in Ayurvedic bhasma, they are also present, which I didn't talk to you about, and certainly in homeopathic medicines, they are also present. So here we have a case where there is a material basis, and the material basis is a concrete evidence for the starting material to be retained in the final product. And this does not, of course, go against the grain of anything else that we've discussed today. There could be water layering around these nanoparticles. There could be radiation coming out of this. There could be a quantum chromodynamic effect with these nanoparticles. But here we have a concrete evidence that there is a material basis for the entire suite of action that homeopathic medicines have. Thank you. So this is the great research he has done for homeopathy. और जो मैं बोलता हूँ कि ये जो सब रिसर्च है, ये हम लोगों का काम नहीं है, ऐसे ही लोगों का इसके अंदर आना ज़रूरी है। और हम लोगों का ये काम है कि ये रिसर्च हम कम्युनिटी के सामने रखें और खुद हमारे फ्रेंड्स को बताए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। दो चीज़ें तो उसमें क्लियर हो गई कि इनकी रिसर्च ही कि एवोगाड्रो नंबर को ब्रेक किया, जो कि कुछ सालों तक लगता था कि हाँ एवोगाड्रो नंबर के बाद कुछ होता नहीं है, और उसके बाद हाँ सो व्हाट, अगर कुछ होगा भी उसके अंदर तो हाउ डज इट एक्ट, वो एक्ट कैसे करेगा। सो ही शो बोथ द थिंग्स, दैट इज हार्मोसिस इफेक्ट आल्सो, एंड एज वी नो दैट एवरीथिंग इज जो प्रेजेंट और कमिंग साइंस, जो भी कहा साइंस के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, क्वांटम फील्ड के अंदर, नैनो पार्टिकल्स के अंदर, जो भी नैनो बायोलॉजी के अंदर जो भी रिसर्च आएंगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को सेल, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, ये सब पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है। ये सब रिसर्च आ रहे हैं और दे आर होम्योपैथिक प्रो, होम्योपैथी के लिए वो बहुत हेल्पफुल रिसर्च है। उस वजह से हमें एक तो पता चलता है कि यस व्हाट वी आर डूइंग इज़ वेरी गुड एंड वी आर साइंटिफिक, वी आर नॉट जस्ट अ सूडो साइंस। ये सब रिसर्चेस है, किसी के ऊपर किसी ने भी पूछा तो उसके मुंह के ऊपर ये मार दो
फेंक दो, ये सब लिंक है, वीडियोस है, आप सब फेंक सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये क्या है एक्चुअली। तो आपको कोई डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रिसर्च को समझिए। आपके प्रैक्टिस के अंदर जो आपको खुद करना है, डबल ब्लाइंड स्टडी रिसर्च या किसी भी सिम्टम स्पेसिफिक ड्रग्स है या डिसीज स्पेसिफिक रेमेडीज है, उसको समझिए, उसको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए और उसका डेटा रखिए। उसके जितने भी आप एविडेंस रख सकते हो, लेबोरेटरी एविडेंस, सोनोग्राफिक एविडेंसेस हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, ये सब एविडेंस जमा कीजिए और उसको डबल ब्लाइंड में कन्वर्ट करके होम्योपैथी को प्रोग्रेशन में लाइए। और ये ज़्यादातर लोगों को बताइए कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स रिसर्च होम्योपैथी में होता है, ये कोई फेक चीज़ नहीं। यस, इट इज़ ट्रू, इन होम्योपैथी रिसर्च इज गोइंग ऑन और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क, देन वी विल कंक्लूड दिस सेशन एंड ask the questions very quickly, don't waste time. विचार करत बसू नका. नसतील तर नाही म्हणा क्वेश्चन, सो विल कन्क्लूड दिस. चॅट बॉक्स मध्ये पण सांगितलं नाही तरी चालेल, नो म्हणून सांगा, म्हणजे मला पटकन वाइंड अप करता येतं. सो ओव्हरऑल आजच्या सेशनची समरी अशी होती की जर आपल्याला कोणी विचारत असेल, समवन इज आस्किंग अबाउट यस इन होमिओपॅथी, यस देर इज एनी रिसर्च इज गोइंग ऑन, सो यू मस्ट हॅव टू से यस इट इज, and we must have this kind of proofs. You must have to go into the journals also. Reputed journals में आपको ये सारे रिसर्च मिलेंगे. कोई रिसर्च ग्रुप्स है जो ल्यूक मैंटेनियर है, वो एपिजेनेटिक्स है, जयेश बिल्लारे की रिसर्चेस है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको वो सेंड कर सकते हो और आप खुद भी समझ सकते हो और उसको प्रैक्टिकली आपके प्रैक्टिस में यूज़ करो और आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को अभी जो आपके क्वेश्चंस थे कि लोगों को पता नहीं, क्यों कैसे पता चलेगा, अपने आप तो नहीं पता चलेगा, मार्केटिंग करनी चाहिए, आप लोगों को जाके बताना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है, होम्योपैथी ऐसी है. सो देन एंड देन पीपल आर गेटिंग टू नो व्हाट इज होम्योपैथिक रिसर्च, होम्योपैथिक रिसर्च में क्या होता है, ये सब आप लोग सबको बताइए कि एक्चुअली में क्या होता है, होम्योपैथी कैसे काम करती है, उसमें अंदर क्या रिसर्च है. डबल ब्लाइंड स्टडी भी हो रही है, लेकिन उसको जितना भी कमर्शियल लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आगे चल के होता होगा, क्योंकि सूरज तो उगना ही है, वो आएगा, कोई रोक चाहे कितना भी रोके. तो और एक सिंपल है कि इतने सालों से 200 सालों से हम लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसे ही कोई फेक चीज़ नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो भी रिजल्ट आते हैं, बस हमें उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना आना चाहिए. और नाउ आई एम स्टॉप हियर. सो ये जो स्ट्रीम है ये यूट्यूब पे भी हेलो सर. अवेलेबल है. हाँ हेलो. हाँ सर, मला एक क्वेश्चन होता. हाँ, सर, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स आणि मिल्क खाणं योग्य आहे की नाही? काय प्रॉब्लेम. मोस्ट ऑफ म्हणतात की ते सोबत तो खायलाच नाही पाहिजे, आयुर्वेदिक पण कन्सेप्ट आहे, दोघांमध्ये तर कंटेंट एकच आहे. काही नाही काही नाही, ते आयुर्वेदिक कन्सेप्ट आहे, फॉरगेट इट. हा, तर ते खूप वाईडली मला विचारलं जातं आणि दोन्हीमध्ये असं प्रोटीन, फॅट आणि कार्बोहायड्रेट हेच आहे, तर मग नाही काही खाऊ शकतो प्रॉब्लेम ना आपण? नाही, खाऊ शकतो. ओके ओके. सो हा जास्तीत जास्त रिसर्च तुम्ही लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि ही जी स्ट्रीम आहे यूट्यूबला नंतर आत्ता लाईव्ह चालू आहे, आणि ही कोणी विसरली असतील तर त्यांच्यापर्यंत नंतर ही स्ट्रीम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत अशी ह्याची लिंक शेअर करा आपल्या यूट्यूब चॅनलची, त्याच्यामध्ये डिटेल्स टाकून द्या, म्हणजे ॲटलिस्ट तेवढं तरी काम करा. डोंट बी टू मच लेझी. आपण खूप ऐकतो बसतो, आपण ह्या सेशन्समध्ये पण किती लोक येतात, किती इंटरेस्टेड आहेत हे लक्षात येतं. सो प्रश्न विचारत नाही, यू आर नॉट दॅट मच एन्थुझियास्ट अबाउट दॅट, की इतकं इन्व्हॉल्व्ह व्हा, तोपर्यंत तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीतून रिझल्ट तुम्हाला तसाच मिळणार आहे, तुम्ही जितकं देणार आहात. पेराल तेच उगवेल, तुम्ही जर थोडं पेरलं तर तेवढंच उगवणार आहे. सो
द रिझल्ट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल आहे. तुमच्यासोबत जे पण होणार आहे ना त्याच्यासाठी दुसरं कोणी रिस्पॉन्सिबल नाही. तुम्ही जे करता ते तुम्हाला रिस्पॉन्स आहे त्याचा, बाकी दुसरं काही नसतं. सो कीप ऑल दिस इन माइंड आणि होमिओपॅथिक रिसर्च जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करा. माझ्या वतीनं आपण हा स्ट्रीमच्या माध्यमातून तुम्ही ती जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, तुमच्या फ्रेंडसोबत पेशंटसोबत शेअर करा आणि त्यांना कळू द्या की काय होमिओपॅथीमध्ये होत आहे. सो नाऊ विल end the stream here. All the best.